Oh.
बताएं सालू जी कैसे हो? आपने वीडियो नहीं डाला पितृपक्ष वाला? आपकी लाइव में थे और फिर हमारी वीडियो नहीं बना दिया। चलेंगे वहाँ पे ये बोलेंगे पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम वाला वीडियो देखना प्लीज। बैठे हैं, लाइट नहीं आ रही है, आज पंखा बंद है, गर्मी बहुत है आज। हम लोग समय कॉल आ रहे थे आपको, आप वीडियो देखे थे कि बाबा वाला, वही आप बोल रहे थे भैया क्या बनाए हो आज आपका विधि पत्नी। अच्छा हाँ, कमेंट पढ़ा था आपका। ठीक है ठीक है। हाँ देखा था कमेंट सालू जी। शॉर्ट है, लॉन्ग में है कि शॉर्ट में है? लॉन्ग वीडियो है, लॉन्ग वीडियो देखकर उस पर कमेंट करना आप। और बताएं सालू जी, धूप निकलेगी बारिश है आज आपके यहाँ? क्या बनाए हो आज आप? वही जो डेली बनाते दाल चावल। एक लोग हैं, उन्हीं की लाइव चल रही है। तैयार नहीं। आने के लिए सालू जी फिर कब तक बनेगा प्लान? यहाँ तो बहुत गर्मी है। छोटी सिस्टर, आपका घर और आपका काम हमको बहुत अच्छा लगता है। और दीपक जी कहाँ इस समय? आपने वीडियो नहीं डाला पितृपक्ष चल है तो वो वीडियो डालते कोई पितृपक्ष वाला? बताएं सालू जी। बताएं सालू जी। अच्छा, राधे राधे बोल देना दीपक जी से। जानवर का खाना। हाँ, जो जात खाते हैं वो जानवर है। किसी का जात खाते हैं वो जानवर। अच्छा रुक जाओ, हाँ थोड़ा उसमें कहा। वो वीडियो नहीं, तूने पितृपक्ष वाला वीडियो डालते हुए प्रदीप मिश्रा का। सही नहीं था। सोनम से बात हुई थी?
वीडियो देख कर उस पर कमेंट जरूर करना छोटी सिस्टर आप। सोनम के लाइव आए थे, लाइव में बात हुई थी 11 बजे है। इसको सालू जल्दी से कंप्लीट करा दे, टेंशन खत्म हो जाए हमारी। हम कहीं आ जा नहीं पा रहे हैं वॉच टाइम की वजह से, 2 साल हो गए हैं ना वीडियो बना पा रहे हैं। मैं से हमारा ध्यान उसी में लगा रहता है कि कब चैनल हमारा वॉच टाइम कंप्लीट हो जाए। अब वॉच टाइम कंप्लीट होगा ना, हम तुम सोनम 3 लोग मिलकर ऐसा बनाएंगे वीडियो, पूछो ना, लॉन्ग वीडियो। हाँ कन्फर्म का रूम तो यहाँ है, आपको डिसाइड करना आप कितना अफोर्ड कर सकते हो। 3000, 4000, 5000 कमरा तो यहाँ 1500 से स्टार्टिंग है। 1500 का भी दिला देंगे, हमारे दोस्त का मकान है भाई। नए शहर में शिफ्ट होना बहुत बड़ा काम होता है सालू जी। यहाँ आओगे देखोगे यहाँ जो आपको अच्छा लगे। यहाँ हर महीने किराया देना रहता है, महंगा कमरा ले लोगे तो हर महीने कैसे एडजस्ट करोगे। यहाँ पंद्रह 1500 का कमरा, 2000 का, 2500 का, 3000 का। सोच विचार लो ढंग से, तभी तो। बिना सोचे विचारे कोई नहीं काम करना चाहिए, पहले 10 बार सोचो। हाँ, और ये बात पक्की, अगर सोशल मीडिया काम करना तो काम नहीं हो पाता है। ना वहाँ अच्छे मंदिर हैं, ना अच्छे पार्क हैं, ना वाईफाई वहाँ मिल पाता है। अगर सोशल मीडिया काम करना तो शहर में ही हो पाता है। अब वाईफाई सर कैसे शहर में इसलिए काम हो रहा, मेरा एक दोस्त गांव जानकार है लेकिन उसको वहाँ कोई नहीं हो पाता है। शहर में रोज़गार ज़्यादा होते हैं, चाहे जिस चीज़ को हो। ये ऐसा करो, पहले आप वहीं रहो, ठीक है। हाँ, सोनम के हस्बैंड से बात कर, काम करें उनके साथ है। हाँ, आप लोग वहीं रहो, काम जब सेट हो जाए, काम करने लगे, तब फिर यहाँ आने का विचार बनाओ। यहाँ सबसे मेन होता पैसा आना। हाँ, पैसा कैसे आए। सोनम से बात करके उनके हस्बैंड से करो काम लगवाएं, पहले काम करें। उनका काम उधर लखनऊ रायबरेली में चल रहा है, और उसमें पैसा बहुत है सालू जी। अगर वो काम पहले कुछ दिन करें, फिर धीरे धीरे खुद अपना काम करने लगो। हम
समझ रहे हैं सालू जी बात हमारी है। सोनम के हस्बैंड पहले मिले, वो काम देखे, काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, क्या दिहाड़ी लगाते उनकी, क्या होता क्या नहीं होता है। सोनम के हस्बैंड से सालू जी काम, दीपक जी काम करे पहले तो 4-6 दिन। हाँ, यही कह रहे हैं, यही बात तो हम कह रहे हैं। चौधरी जी राधे राधे। यही हम कह रहे हैं कि यहाँ ज़्यादा अर्निंग हो सकती है आपकी। यहाँ यहाँ इतने मंदिर हैं, इतने पार्क हैं। हाँ, अब वही आपके यहाँ 1-2 मंदिर है बस। यहाँ तो मंदिर मंदिर भरे पड़े हैं। तुम्हारी वीडियो देखी थी, कहाँ की वीडियो है वो? कहाँ लड़ाई झगड़ा होगा, सो रहे थे क्या आकाश चौधरी? और तुमने वो वीडियो देखा नहीं आकाश मेरा? हाँ, अभिषेक चौधरी, पति पति पत्नी पीड़ित पुरुष आश्रम। हाँ, लॉन्ग वीडियो, उसको देखो, उस पर कमेंट करो यार। तुमसे कहा था उसमें। हाँ, अभिषेक को तुमने वीडियो नहीं देखा? हाँ, उस पर कमेंट करो, उसको अपने ग्रुप में शामिल करो यार। हाँ, ना सुपर चैट किया यार तुमने, सुपर चैट करो एक। अपने किसी दोस्त से करवाओ यार 40 रुपये का सुपर। वो तो फिर एडसेंस भी ना है। ₹40 सुपर चैट कराओ से एक। वो तुम्हारा वीडियो, हाँ, कपड़े सिलने में मिलता है। खिलाएंगे, मिठाई खिलाएंगे, केक कटेंगे, सब कुछ होगा। लाइव बंद करेंगे तब भेजेंगे वीडियो हम। और देखें ना, कॉपीराइट म्यूजिक ना लगाना वीडियो में। राधे राधे सनातनी जी। हाँ, मिठाई खिलाएंगे, केक कटेंगे, सब कुछ होगा यार। हाँ, और बताएं भाई सनातनी जी। हाँ, कहाँ पे हैं आज? हाँ, लाइव बंद करेंगे तब भेजेंगे, अब लाइव चल रहा है ना। वो वीडियो हमारा ग्रुप में भेजा था तुमने अभिषेक? बताएं सनातनी जी, लखनऊ में है, कहाँ है कि भाई गाँव में है? आज लाइट नहीं मेरे यहाँ, बहुत गर्मी, देखो पंखा बंद पड़ा है यार। अब खर्चा का मान चलो 3000 रुपये कमरे किराया हो गया, बाकी आप ऊपर है। साधारण खाना पीना खाओ, अच्छा खाओगे। यहाँ खर्चा तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना। आईडी कर दिया तुम्हारी पिन।
मत करो यार, तुमसे थोड़ी कह रहे यार है। ठीक ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद, ऑल सपोर्ट ऑल शो टाइम जी हैं। कहाँ है ये? बैठे आज कहाँ बजने जा रहा है? हाँ? आज कहाँ बजने जा रहा है? अरे सुंदरकांड नहीं कर अच्छी। सुंदरकांड में ये देखा चाचा आ जाओ वो दिना फिर वे जो बुलाओ नहीं तो हमको हटा अब वे राख रहे नवरात्र में राख रहे तो हमको बताया फिर कब कितने दिन में लौटेगा चाचा आए थे, उन्हीं साथ आ गए। आज जागरण दे रहे अब तो आप लोगों ने साथ अब कब ढोलक बजो तैयार हो गए थे वीडियो बनाने को लोग। हाँ, अच्छा एक चैनल खोल देखो, वीडियो डालिए।
बोलो अभिषेक, ध्यान दे रहे हैं? दुकान पे रहते ना तो कस्टमर आ जाते हैं। वो वीडियो देखो पहले, जाओ तुम यार, वीडियो पे कमेंट करो। हाँ, बहुत बहुत स्वागत। जल्दी से उसको पूरा करें यार, मोनेटाइज चैनल एडसेंस की ना। समझ रहे हो ना अभिषेक? तुम्हारा एहसान है हमारे ऊपर, ऐसी बात नहीं है। वीडियो तो इसी मोबाइल में है। हाँ, वीडियो तो इसी मोबाइल में है। बहुत एहसान है आपका। हाँ, लेकिन जल्दी से और कंप्लीट करा दे यार उसको। हाँ, कोई दूसरे लोग आज सब्सक्राइब करवाएं। शालू जी हैं, वही हैं, आईडी तुम्हारी पिन कर दी है। हमारा पूरा हो जाए फिर तुम्हारे चैनल पर काम करेंगे हम। लॉन्ग वीडियो देखो जाके उस पर कमेंट करो। हाँ, पति पत्नी पुरुष आश्रम। ठीक। उन्होंने सब्सक्राइब कर रखा आपको। हाँ, पहले से। आश्रम वाले वीडियो पहले जाओ तुम उस पर कमेंट करो यार। हाँ,
कुशवाहा मौर्य सब एक ही हैं। मौर्य तो एक है। एक लोग पूछ रहे हैं नेपाल से, ये देखो अब नेपाल के पास से हैं अभिषेक चौधरी, अच्छा 12-14 साल के हैं, दोस्त हमारे हैं। इनके गांव के लोग कहते हैं कि उतनी उम्र तुम्हारे कैसे दोस्त हो गए, हमारे लोग कहते हैं तुम्हारे इतने बड़े उतने छोटे कैसे दोस्त हैं? तो कुछ भी हो सकता है, विचार मिल गया आदमी, दोस्ती हो गई है। ये नेपाल के पास से हैं। अपने फोटो खींचो तुम अपने मोबाइल से। हाँ कोई नहीं होते, वैसे नहीं बेड़ी फोटो खींचो। साहब भाई देखिए, एक भला और ऐसे खींचो। हाँ हमारा कैमरा नाइस है। बिल्कुल सामने आओ, ये आना चाहिए। हाँ क्या? मतलब कि बजा रहे हैं बाजा ऐसा। हाँ एक ही आवाज बहुत अच्छा था नहीं, ठीक है। बुलंद आवाज है। अगर ये ना बजते तो ढोलक उनकी काम नहीं कर रही। नवरात्रों में 2-4
में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आजू बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आजू बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया, आजू बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आजू बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आजू बीरज में होरी रे रसिया, होरी रे रसिया बरजोरी रे रसिया, आजू बीरज में होरी रे रसिया। संगति करी अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की। संगति करी अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी लोगों की।
हरे रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा हरे कृष्णा कृष्णा हरे करो अपना ठिकाना तंबुआ गिरे कहाँ जई हो करो अपना ठिकाना तंबुआ गिरे कहाँ जई हो करो अपना ठिकाना
रबिरे कहाँ जइनो सेंट्रल लक्ष्मण राम भजो भज राम सिया राम सिया राम।
कर न सके हम प्यार का सौदा ऐसी बाजी हमारे लिए छोड़ खेल लक्ष्मण राम बजो बजो सिया
राम राम।
लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो। जय हो जय हो। और बताएं सर कैसे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार। मौसम कैसा है बताएं सर। जय बाबा की, जय बाबा की। कहाँ चले जाते सर, बहुत याद कर रहे थे आपको। बहुत देर से दर पे आंखें लगी थी, हुजूर आते आते बहुत देर कर दी। बारंबार प्रणाम आपको, वंदन है, अभिनंदन है हमारे चैनल कुशवाहा कॉमेडी पर। बताएं आपके यहाँ कैसा मौसम मौसम है, बारिश है या धूप है? जो तुम याद आए, बहुत याद आए। आज लाइट नहीं आ रही मेरे यहाँ, बहुत गर्मी आ रही। जो तुम याद आए, बहुत याद आए। हरे रामा हरे कृष्ण। और लोगों की जिंदगी देखी तो मुझे लगा कि मैं ऐसी जिंदगी नहीं जी सकती।
बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद। तो अच्छा लगा। बताएं सुनीता बहन कैसे हो? पहले तो मैं ये पूछना बहुत बहुत शुक्रिया बहन आपका। ये फैसला लिया कि अब देखो आप आज लाइट नहीं आ रही मेरे यहाँ, गर्मी बहुत है। हाँ, समय जब आपने फैसला लिया होगा कि मैंने शादी नहीं करनी, मैंने अपनी शादी अकेले गुजारनी है। बोलो सुनीता बहन, कई दिन बाद आ जाए, कहाँ चले गए थे? मम्मी पापा चरण स्पर्श बोल देना छोटी बहन। दूसरी भेजो, वही बदल देंगे चैनल पर। हाँ, लिया कि था, इसके पीछे कारण क्या था? अच्छा, उसी फोटो को एडिट करके बना दो अभिषेक चौधरी। जो फोटो भेजी उसी को एडिट करो तुम। वहाँ कारण कोई खास नहीं, बस हाँ, जो फोटो भेजी है ना, 3 फोटो भेजी, उन्हीं में एडिट करो। हाँ, मैंने जिस तरह की आसपास की जिंदगी मैंने देखी है ना, तो उसमें मुझे लगा कि शायद मैं एडजस्ट नहीं कर सकती। अच्छा, क्योंकि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि इंसान को फैसला वो लेना चाहिए पहले अपनी पर्सनैलिटी को पहचान कर। बताएं सुनीता बहन। मुझे लगा कि मेरी पर्सनैलिटी इस तरह की है कि मैं समझौते नहीं कर सकती, मुझे अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीनी, तो इसलिए मैं समझौते, और शादी तो एक ऐसा ही विषय है जिसका अच्छा, समझौते करने ही पड़ते हैं। तो मुझे हम नहीं मिले होंगे। हाँ, हम कहीं चले गए थोड़ा। हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कैसे भी हो। तो मुझे लगा कि मेरी बढ़िया, स्वस्थ है, मस्त है बस। मैंने अपनी बहनों की जिंदगी देखी, अपने आसपास और लोगों की जिंदगी देखी, तो मुझे लगा कि मैं ऐसी जिंदगी जी सकती बढ़िया है बिल्कुल। अपने साथ रहना, अपनी मर्जी से रहना। जब आपने ये बताया अपने परिवार को, अपने पेरेंट्स को कि मैंने शादी नहीं करनी है, घर में दबाव नहीं, हाँ, लगा दो। हमारे परिवार में अच्छे से अच्छा काम करो उस पर अभिषेक चौधरी। हाँ, लगे। कहते हैं परिवार में होते कि पढ़े लिखे हैं सब लोग, मेरे जीवन फादर भी पढ़े लिखे थे। उन्होंने कोई और सुनीता बहन, उस दिन किसी काम से गए थे, काम हो गया थे, नहीं हुआ था बहन आपका? शादियां में मुझे नहीं करनी है, तो ऐसा कोई योजना का नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, बल्कि मेरे बड़े भाई ने तो कहा कि जैसे जो रहना चाहिए वैसे आप हमारे घर में बहुत प्रॉब्लम है। हमारी फैमिली की एक खास खासियत है कि वो हम सारे बोलो सुनीता बहन, उस दिन गए थे काम सुबह नहीं तो? बढ़िया है सब, स्वस्थ है, मस्त है सब। उस दिन बहन किसी काम से गए थे, काम हो गए थे, नहीं हुआ था वो? बताए सुनीता बहन। अच्छा, हमको ध्यान था, हम देखे, पूछे पहला बहन से क्या हुआ है। हाँ, सपना बहन ने लाइव नहीं चलाया था क्या सपना ने? हाँ, हो गया खाना पीना, अभी थोड़ी देर पहले खाया। आज खाने में भाभी ने बनाया केला की सब्जी और रोटी है। कच्चे केले की सब्जी बनती है ना। हाँ, तो उधर गांव कैसे बहन एक वीडियो बनाया था, देखना जाकर, उस पर लॉन्ग वीडियो है मेरा। हाँ, आज सपना बहन की लाइव नहीं चली थी। हाँ हाँ। चलो, भगवान धीरे धीरे हल करेंगे। हाँ, हाँ हाँ, समझ रहे हैं। हाँ, मिलेंगे जरूर, एक बार बहन मिलेंगे। हाँ,
अब सोनम भी काम करने लगी, सोनम साथ आएंगे कभी मिलने यहाँ। हम भी अपनी प्रॉब्लम आपको बताया था और किसी नहीं बता शेयर करते जल्दी हाँ। यही मतलब हम चल नहीं पाते, हमारे पैरों में प्रॉब्लम है हाँ। और बहुत लोग लाइव में जाते हैं, बहुत लोग मिलते हैं, बहुत सब बातें होती, लेकिन हाँ हाँ समझ रहे हैं हाँ। माफ़ी चाहते हैं, हम जानते हैं। पता नहीं कौन देख रहा हो, कौन ना देख रहा हो, कौन सुन रहा हो हाँ। पर्सनल बातें कोई नहीं सोशल मीडिया पे शेयर करनी चाहिए हाँ। उस फोटो को एडिट करो अभिषेक चौधरी, वो फोटो हटा के ये फोटो लगा देंगे हाँ। सुनो ना अभिषेक चौधरी, जो हमने फोटो भेजी है, सोनम देखो सुनीता जी आई हैं हाँ। कब मुलाकात होगी हाँ? सुनीता बहन जब सोनम चाहेगी तब मुलाकात होगी हाँ। ऊपर देखो अभिषेक चौधरी हैं और ये सुनीता बहन है। सुनीता बहन कब बुलाओगी सोनम को अपने यहाँ? हम और सोनम आएंगे हाँ। बोलो सुनीता बहन। सोनम बताओ कब मिलोगे सुनीता जी से हाँ? हेलो हाँ, कह रहे हो जो फोटो भेजा उसे बना दो हाँ। हेलो हाँ, जो फोटो भेजी उन्हें बना दो यार हाँ। हेलो, जो फोटो है उसे बना दो। हेलो अच्छा वही तो हाँ, इनको तो गुमनाम होना चाहिए जैसे मिस्टर इंडिया हाँ। सुनीता नहीं, इनको नाम होना चाहिए मिस्टर इंडिया हाँ। गिफ्ट बताया नहीं जाता है। ये सोनम तुमने बहुत अच्छी बात कही है हाँ। ये स्वार्थी संसार है हाँ। माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है कि बड़ा होकर वो कमा के बुढ़ापे का सहारा बनेगा हाँ। भाई सोचता है कि मेरा भाई मेरी हेल्प करेगा, लेकिन एक सुनीता बहन ऐसी है जो, हेलो सुनीता बहन आप अपने हल्के मत लेना हाँ। अब देखो सोनम बहन पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन फिर भी कितनी बड़ी बात उसने कहा। काल यार कैसे बात करो, क्या कल करनी है हाँ? वो फ़ोन ख़राब है। अभिषेक चौधरी से बात करो। हमने तुमको 3 फोटो भेजी है, उन्हीं 3 को एडिट करो। वो फ़ोन ख़राब है हाँ। फ़ोन तो ये खाली सही है बस। हाँ, इनका नाम मिस्टर इंडिया होना चाहिए। अच्छा चलो, फिर दूसरे दिन दूसरी फ़ोटो भेजेंगे हाँ। अच्छी फ़ोटो खींच कर हाँ, बाबा वाली, तब फिर भेजेंगे हाँ। ठीक।
समझ रहे ना सुनीता बहन? हाँ, आपको एक उपाधि मिलनी चाहिए। हाँ, नहीं नहीं, नाम अच्छा है। फोन खराब है यार, उसमें दूसरे से कनेक्ट होता है कॉल, वो बेकार है फोन अभिषेक चौधरी। कभी फोन उठता, कभी नहीं फोन उठते। क्या नाम रखोगे सोनम इनका? देखो कल फोटो भेजेंगे फिर तुमको। हाँ, अभिषेक चौधरी। हाँ, उसमें फोटो फ्रेम में कॉल आए थे भैया। अरे स्कूल का है ना, आपको मिला होगा। नहीं ले जाना है। हमको वो तंदूर नहीं चल रहा, कह रहे नजर लगा दिया। तो कारण होगा, हवा तो आराम करे। हाँ ले लो, वही फोटो ले लो। हाँ, फेसबुक इंस्टाग्राम पे सब तो फोटो लगी है, वही ले लो। हाँ, वो फोटो ले लो। कॉल मत करो उससे, फोन कॉल नहीं होगा, वो फ़ोन ख़राब है यार। हाँ, फ़ोन ये सही है बस। लगा दो फोटो वही जो फेसबुक में लगा है। सुनीता बहन कहाँ चले गए? आज हम सोशल मीडिया पर हैं तो सोनम की वजह से, अगर सोनम ना होती तो शायद हम ना होते हैं। कहते जो दूसरों के लिए सोचता अपने लिए सब लोग जीवन जीते हैं। सुनीता बहन, हाँ, कहते हमको क्या मतलब, हमारा कौन सब्सक्राइब बढ़ना, हमारा वाच टाइम बढ़ना, क्या करना है। हाँ, लेकिन आप जो परोपकार किया लोगों पर कर रहे हैं, आगे करेंगे। हाँ, उसके लिए बड़े भैया बारंबार प्रणाम करते हैं आपको। हाँ, आपके माता जी को और आपको। हाँ, सुनीता बहन, आपने हमको पैसे तो नहीं दिया है, लेकिन पैसे तो बढ़ के वो चीज़ दिया आपने हमको। हाँ, अब सोनम पंडित पूछ के आपको दो नाम होंगे। हाँ, जब कोई विकास तरक्की करता है तो उसका नाम बदलते रहते हैं। हाँ, स्टेप बाय स्टेप। पंडित से बता देना। हाँ, कि जो निस्वार्थ भाव से सेवा करता हो, कोई बिना मतलब के। हाँ, जीतू भाई से पूछ लेना। हाँ, जीतू भाई, अमित भाई, सपना भाई, सबसे पूछ लेना। हाँ, सबसे सोनम सोच विचार तब फिर नाम रखना। हाँ, सबसे पहले पूछना। हाँ, जीतू भाई से, अमित भाई से, सपना बहन से कि सुनीता बहन क्या नाम रखा जाए। हाँ, ये नाम बदलते रहते सुनीता बहन। हाँ, बहुत बढ़िया। कल्याणपुर में होगा, जवाहरलाल स्कूल के पास। जा रहे हो कहाँ? जाना तो हमारा थोड़ा सामान लेते आना। एक साइड हमारी का बटन करा लेना। जवाहरलाल स्कूल बगल में। नहीं, जवाहरलाल के अंदर जब गली में घुसोगे, हाँ, वहीं पूछ लेना किसी से। जीतू भाई पंडित है, सोनम पंडित है, पंडित। हमने पूछा था ना एक दिन। हाँ, सबसे ऊंची कास्ट वहाँ की है। हाँ, उन लोगों को राशन मिलता है, न कोई सरकारी सुविधा मिलती है। बता के जाना, ठीक है। और अंकित कब तक आएगा? चैनल मोनेटाइज हो गया मेरा। हाँ, पता चला था नहीं चला? चैनल मेरा हो गया मोनेटाइज। हाँ, हाँ, जीतू भाई पंडित है। हाँ हाँ, निकाल नहीं मोबाइल, कर दो यार थोड़ा, एक वीडियो लगी, निकालो मोबाइल अपना। मोबाइल है नहीं ना, तो मेरे मोबाइल चार्ज नहीं, तो
नाम रखना एक बढ़िया से गिफ्ट इनके लिए होना चाहिए है। शाम को आना तो फिर करना, ठीक। ऐसे लोगों को मान सम्मान होना चाहिए है। ये सब दुनिया स्वार्थी संसार है। हाँ, आदमी नौकरी करता है, पैसे मिलेंगे, काम करेंगे। हम लोग कपड़े सिलते हैं कि पैसा मिलेगा, और जो आदमी कोई मतलब है ना हो उसको क्या कहा जाएगा। हाँ, समझ रहे ना सुनीता बहन? सबसे पूछना सोनम की सपना बहन से, जीतू भाई से, अमित भाई से है कि सुनीता बहन का नाम क्या रखा जाए है। जीतू भाई सबसे ऊंची कास्ट का है। हाँ, वो लिखते हैं ना दरबार। हाँ, उनका नाम जीतू है, दरबार जो है उनकी कास्ट है। हाँ, जैसे अपने पंडित लिखते हैं। समझ रहे ना सुनीता बहन? हाँ, जीतू नाम है उनका, दरबार जो कास्ट, जैसे अपने पंडित लिखते हैं, द्विवेदी शुक्ला लिखते हैं। हाँ, और नाम रखना भी जरूरी है। इतना सबका सपोर्ट करते हैं। समझ रहे ना सुनीता बहन? सोनम तुम भी। जीतू जो है, जीतू नाम उनका, दरबार जो उनकी कास्ट है, जैसे अपने यहाँ पंडित होते हैं, शुक्ला होते हैं, अवस्थी होते हैं, वैसे दरबार उनका। उन लोगों को सरकार से कोई चीज़ नहीं मिलती, सबसे ऊंचे माने जाते हैं। गुजरात में दरबार सबसे ऊंचे होते हैं, जो लोग दरबार लिखते हैं। एक दिन पूछा था हमने, हाँ, हमने कहा दरबार क्यों लिखते हो, तो बताने लगे। हाँ, कहना है तुम लोग पंडित यूपी में लिखते हो, पंडित शुक्ला अवस्थी है, वैसे हम लोग दरबार लिखते हैं, सबसे ऊंची कास्ट। और ये सपना बहन जो सोलंकी है सोनम, ये अपनी कास्ट में कुशवाहा लोगों में है। हाँ, वहाँ सोलंकी लिखते हैं, यहाँ कुशवाहा लिखते हैं बस। एक दोस्त हमारे महाराष्ट्र से हैं, वो बता रहे थे एक दिन। हाँ, कह रहे हैं वही कास्ट है, जैसे कहीं मौर्य लिखते हैं, कहीं कुशवाहा लिखते हैं। हाँ, वैसे वहाँ अलग अलग जगह लिखते हैं। तो ये सपना सोलंकी है, वो भी अपने ही कास्ट की है। हाँ, खाली वहाँ लिखते अलग अलग है। हाँ, अब इसे अपने गांव जीतू पहले मौर्य लिखते थे, अब देखो सब लोग मौर्य लिखने लगे। जीतू देखिए देखिए। अगर दोस्त हो तो उसके विषय में जानकारी हो, थोड़ी बहुत होनी चाहिए, ना कुछ हो तो हो। क्यों सुनीता बहन? है भाई बहन हो तो भाई बहन के विषय में कुछ जानकारी होनी चाहिए, उसकी लाइफ के विषय में। है एक दिन सोनम सुनीता बहन से बताया कि हम विकलांग चल नहीं पाते, तो सुनीता बहन को बहुत दुख हुआ, कहने लगी बताओ हमको पता नहीं था। हमने कहा हम बताते नहीं, लेकिन जब आदमी जुट जाता है तो फिर बता देते, नहीं तो वैसे नहीं, सबसे नहीं बताते हैं। अभी हैं बहुत लोग लाइन में आते हैं दोस्ती, लेकिन बता जिक्र नहीं करते किसी से। है खाली सुनीता बहन एक है जो इनको मालूम है। हाँ, कि भैया विकलांग है, चल नहीं पाते। हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ होता है, दिक्कत है।
बोलो सुनीता बहन। कहाँ गए सुनीता बहन? राधे राधे भैया, राधे राधे। बढ़िया है यार, धूप बहुत निकली, बहुत गर्मी है आज मेरे यहाँ। सोनम जी ऊपर पहचानते इनको भैया को? ऊंचाहार वाले भैया हैं, सनातनी जी हैं। कैसे हो रोशनी? राधे कृष्णा, राधे कृष्णा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोशनी जी हमारी लाइव में हैं। कैसे हो रोशनी? बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपका हमारी लाइव में। रोशनी जी कहाँ से? आप पहचान नहीं पाए हम आपको। रोशनी 5G। सोनम तुमने पहचाना रोशनी जी को? अच्छा, अंकित भाई राधे राधे। हमको जानते रोशनी जी? हम भी कानपुर से हैं। ठीक ठीक बहन। बताए रोशनी जी कहाँ से आप? कल्याण, कानपुर, बर्रा से हो ना? बर्रा से। हम कल्याणपुर से हैं रोशनी जी। और बताओ अंकित भाई। नहीं बताया। अच्छा, अंकित भैया ने आपको बताया है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। अच्छा, नौबस्ता से, नौबस्ता से। अच्छा 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 अच्छा। ये सोनम हमारी भतीजी है। हाँ, ये भी कल्याणपुर बुद्धा पार्क के पास रहती है। चलो रोशनी जी, कभी कभी आना कल्याणपुर, तो फिर आना, आपका स्वागत है हमारे। सनातनी जी बहुत धन्यवाद आपका। हाँ जी, हो गया है। हाँ हाँ हाँ। रोशनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। सोनम, ये जो है सनातनी भैया, बहुत बढ़िया लिखते हैं, लेखनी इनकी बहुत गजब की है। बहुत अच्छी है। रोशनी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। रोशनी जी, आप, हमारा लाइव चलता है सुबह 11 से लेकर पूरा दिन लाइव चलता रहता है। अंकित है ना, अंकित, अंकित राइडर भैया, उनके जान पहचान से है। अंकित भैया उनकी जान पहचान से है सोनम, ये रोशनी बहन। आपका लाइव कब चलता है रोशनी जी? हाँ,
रोशनी जी, आप कितने बजे लाइव आते हैं? आपका लाइव कितने बजे चलता है रोशनी 5G? रोशनी जी, आपका लाइव कब चलता है? रोशनी 5G। तो अवधि कॉमेडी मेरा चैनल है। रोशनी जी, बताएं लाइव कितने बजे चालू होता है आपका? बताएं रोशनी जी, कब लाइव चलता है आपका? आकाश चौधरी जी, इनको कर लो ज्वाइन। है रोशनी जी को, हाँ। आकाश चौधरी जी, रोशनी जी को ज्वाइन कर लो तो रोशनी जी। हाँ, फोटो डिलीट कर देते हैं। कहाँ रखे? गैलरी भर भर जाती है। समझो अभिषेक, आकाश। हाँ, फोटो डिलीट कर देते हैं। डिलीट न करें, कितना फोटो भरे रहे हैं पता है? ऐसे फ़ोन खराब हो चुके हैं। ठीक। आकाश नहीं, अभिषेक चौधरी हैं। वो हटा दिया था। हाँ, फोटो रखने का गैलरी भर जाती ना, लोड पड़ता फ़ोन पर।
हाँ, देखो दूसरी फ़ोटो कोई बनाएँगे तो फिर लगा लेंगे। ठीक, ठीक। हमारे चैनल में सफाई नहीं है अभी, पढ़ाई-लिखाई काम बाकी है उसमें है। बैनर जो पीछे लगा उस पे नहीं लोगों को कुछ लगा है। हम कर नहीं पाते इंग्लिश। हुँ। बढ़िया से फ़ोटो बनाओ अभिषेक चौधरी एक। हाँ, हाँ, हाँ। हम कुछ नहीं कर पाते, वीडियो बना लेते डाल लेते बस। हाँ। हरे रामा हरे कृष्णा 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 हरे हरे। जही विधि हो नाथ हित मोरा। चलो अच्छी बात है, करवाओ अंकल अंकित। सही बात। हाँ, सब लोग एक दूसरे की हेल्प करेंगे तभी हो पाएगा। हाँ, एक बार कहानी पढ़ी होगी तुमने। यहाँ एक बार कुछ कबूतर थे जाल में फंस गए, एक एक करके उड़ना चाहता था लेकिन नहीं उड़ पा रहे थे। फिर जो उनमें सबसे मेन था वो कहने लगा एक बार सब लोग ताकत लगाओ हम। सब जितने कबूतर थे सब एक साथ उड़े, पूरा जाल वाल लेके सब उड़ गए आकाश में। हाँ, सब हेल्प की बात है। आज तुम अंकित हेल्प न करते तो आज हम क्या यहाँ होते ना होते हैं। तो हमारे फर्ज बनता हम दूसरे की हेल्प करें। हम
हाँ। सब एक दूसरे के हेल्प से काम होता है। ये सोशल मीडिया नेटवर्किंग मार्केटिंग है। अगर एक दूसरे की हेल्प नहीं करो, तुम्हारी कोई हेल्प नहीं करेगा। अब शादी बारात में क्या होता है, तुम्हारे यहाँ शादी बारात हुई, तुम व्यवहार दे गए 500 रुपये 1000 रुपया, उनके यहाँ वो लोग दे गए। हमारे यहाँ शादी है लड़की की, सब लोग पैसे दे दिए 1000 500 रुपये, 10-20 हज़ार रुपया मेरे पास आ गया, 20-30 हज़ार रुपया आया, हमारा कोई काम हो गया। वही व्यवहार इसमें काम करता है अंकित। हाँ वो तो पता है। हम भाई हमने पहले बताया था। एक लोग कहने लगे कि तुम्हारे बिरादरी हैं पड़ोसी, हमने कहा पहले वो सोशल मीडिया में हमारी इनकी मुलाकात हुई थी जब तुम लाइव आए थे, सोशल मीडिया पर हमारी तुम्हारी दोस्ती हुई थी। हाँ वो तो बाद में परिचय खुलते खुला है। हाँ तो जो सोशल मीडिया की दोस्ती होती है बहुत पक्की होती है। एक हम लोग ग्रुप है महाराष्ट्र का, सपना बहन का। हाँ हमको ध्यान है हमारी तुम्हारी कैसे दोस्त, तुम्हारा लाइव चल रहा था, हम तुम लोग तुम्हारी लाइव में जाते थे, सोनू भाई भी जाते थे। फिर परिचय हुआ, कहने लगे आओ, फिर जब गए तब मुलाकात हुई। तो हमारे गांव 2-3 बार आए हो, 3 बार आए मेरे गांव। हम एक बार मंदिर के पास आए, एक बार स्कूल के पीछे आए, एक बार वहाँ मंदिर पर आए, गाँव के बाहर जो मंदिर बना है। वो वाली आश्रम वाली वीडियो बढ़िया रैंक कर रही यार है। फेसबुक से हुई थी दोस्ती है। फेसबुक पे इसी तरह है कि उस ग्रुप में बहुत लोग हैं। हैंडीकैप सपना नाम उस चैनल का है, रात में 12 बजे लाइव चलता है। कभी मेहनत किसी बेकार नहीं, तुम लोग उस समय मेहनत न करे, हमारी हेल्प न कर दो, आज हमारा मनोबल गिर जाता, चैनल न चल पाता। हम अब बस यही इंतजार है तुम वहाँ से आओ, वो वाला फ़ोन लेके अपना अल्ट्रा। हाँ तब तक भैया बहुत बड़ा सब्सक्राइब हो जाएंगे। हाँ एक बार फिर तहलका मचेगा। हाँ हाँ हमारे फ़ोन क्वालिटी डाउन है। हाँ इसीलिए एडिटिंग नहीं सही हो पा रही है न। तुम आओगे सब चैनल सब मर जाएगा। हमने सब प्लान बना रखा, तुम्हारी शादी को इंटरनेशनल शादी बना देंगे। हाँ खाली जहाँ भाई कहीं भी शादी हो उनसे बता देना। हाँ अपने घर में बता देना। हाँ कि शादी की कोई रस्म होगी, सबसे पहले उसका वीडियो बनेगा, फिर उसके बाद रस्म होगी, फिर वीडियो बनेगी, फिर रस्म होगी। हाँ वो सब चैनल पर पड़ती रहेगी। हाँ सोनम दीदी के चैनल पर, हमारे चैनल पर। हाँ उसमें कॉमेडी मिक्स कर करके। हाँ होगा क्या, ऐसे हमको ढूंढना नहीं पड़ेगा, मंडप नहीं ढूंढना पड़ेगा, दूल्हा नहीं ढूंढना पड़ेगा, दूल्हा नहीं ढूंढनी पड़ेगी। हाँ बैंड रोड लाइट नहीं ढूंढनी पड़ेगी, उसी में सब काम होता रहेगा। अब उसमें $10 कंप्लीट हो तो वो एडसेंस पिन आए हैं। अब कि अपना भी तुम एक मेन चैनल रखो। हाँ बाकी सपोर्टिंग के लिए आईडी रखो। हाँ
तुमने अंकित बड़ी हेल्प करी छोटे भाई हो, लेकिन तभी हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं यार है। बोलो अंकित। अरे राजा राम पिया पिया। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद भाई अंकित भाई आपका। अभी हमारे काम लोग कहते यार कि मोबाइल सही नहीं, अभी चैनल नहीं बन पाओगे, ज़्यादा नहीं चैनल उठ पाएगा। हमने कहा उठेगा। हाँ, बहुत लोग कह देते मुंह पे यार कह देते हैं मोबाइल सही नहीं इसलिए तुम्हारे वीडियो नहीं चलेंगे अंकित भाई। लेकिन ये पता नहीं भगवान किसी न किसी किसी ग्रुप में भेजता जरूर है हेल्प के लिए है। अपने वीडियो में एडिटिंग और थंबनेल सही नहीं बन पा रहा है। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे कान्हा हरे ग्वाला तेरी बसिया दियाती है। आग लगे बता जा वो है थोड़ा करना।
तब तो ठीक है। रफू भी अगर अलग चीज होगी कहीं ज्यादा दूर तो फिर रफू ही किसी बार नहीं सिलेंडर नहीं आएगी तो है, तब तो नहीं होगा। भाई, उसमें रफू मिल जाए। अच्छा हमको लगा हाँ लगा दो। हमको ये लगा कि मतलब इसमें और रफू ही करानी पड़े ये। दूर होती तो कराना पड़ता है, पास में से नहीं। हाँ तो वो मतलब लगा के रफू के सिवा नहीं हो पाता। अरे फिर करवाते हैं, बेकार में गोली लगी उसमें आ गई है। अखबार पढ़ा है बाबू? नहीं अखबार नहीं, नहीं है आई देगा। अखबार लेके नहीं, नहीं लगा पाते, कुछ कर ही नहीं पाते हैं, खाली वीडियो अपलोड कर देते हैं, बना लेते हैं बस। यहाँ सीखा नहीं कुछ हमने यार, भेज दिया ठीक, कोई आए तो फिर लगवा लेंगे, कोई लड़का आएगा। एक बार तुम्हारे गांव आएंगे, हाँ ऐसी बात नहीं, तुम्हारी मेहनत बेकार नहीं जाएगी अभिषेक चौधरी। तब तुम्हारे गांव लोग देखेंगे हाँ कि देखो कहाँ से कहाँ आए, चले यूपी से आए, यूपी छोटे गांव से मिलने के लिए अभिषेक क्या है। तुम्हारे घर वालों को भी लगेगा हाँ कि मेरा बेटा कुछ करता है। नहीं लगा पाते, कुछ भी कर नहीं पाते यार। हाँ खाली वीडियो बना लेते, अपलोड कर लेते बस। हाँ तभी तो। हाँ लगाएंगे हाँ। फोटो कोई मिल जाता वही लगा देता यार। हाँ भगवान भरोसे काम हो रहा, सब भगवान के भरोसे, कोई न कोई लगा देता, कोई न कोई कर देता।
Dingy, dingy, dingy. 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 Thằng gầy. Thằng gầy. Thằng gầy. Thằng gầy vậy, thằng gầy, thằng gầy. Thằng gầy, bawa thằng gầy. Aje, thằng gầy. Bawa thằng gầy. Không. Được không? Bao người देखा जाए बचपन में भैया रोज की वीडियो होनी चाहिए, उसमें देखे कि हम छोटे थे कैसे थे हम। तुम्हें सवाल हम डाल रहे हैं अच्छा मौसम बुरा है, साथ करने के लिए अपना मजा थोड़ा सा बाबू बात करेगी, बाबू बात करेगी। हेलो अच्छा बोल रहा हूँ, बाबू बात करेगी। हाँ बाबू बात करेगी, बाबू बात करेगा। बाबू अच्छा बोल रहे हैं। बाबू का क्या नाम है? बाबू 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 जवाब करें। अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा अच्छा क्या कर रहे हो? अच्छा बाबू बात करेगी। अच्छा हेलो हाँ बाबू बात करेगी, बाबू बात करेगी। अच्छा जरा बाबू बात कर रही है, ये बात कर। हेलो हाँ बाबू बात कर रहे हैं। हाँ नहीं हाँ बात कर रहे हैं। हाँ अच्छा हेलो हेलो हाँ अच्छा बात कर रहे हो। अच्छा हेलो 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 हाँ बाबू बात करेगी। हेलो अच्छा हेलो हेलो हाँ बाबू बात कर रही है, बात कर भाई। अच्छा हेलो बोलो। अच्छा हेलो ड्रिंक ड्रिंक नहीं ये क्या है? उधर जाओ बाहर, ऐसा कर देगा तुमको ऐसा। ये क्या वो? बाहर जाओ, बाहर कुछ नहीं, वो क्या? बाहर जाओ बाहर। प्लेट जैसा। प्लेट प्लेट? खाना खाता है क्या? और टुकड़ा जूता खाना लेके आओ ये।
और उसको पता है उसका डबल हो जाएगा उसके पास वहाँ भीड़ होगी और तुम्हारा खाली होगा हर हर महादेव, हर हर महादेव। और रूबी क्या कर रही इस समय? जाओ बाहर। बाय बाय बोलो रूबी। अरे बाय 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 बढ़िया है, बस स्वस्थ है, मस्त है। और वहाँ अपने गांव कब जाओगी? अपने ससुराल रूबी? बोलो रूबी। अपने गांव कब जाओगी?
और रूबी मम्मी पैर नहीं ठीक हुआ अभी? रूबी रूबी मम्मी पैर नहीं ठीक हुआ अभी? और कर न सके हम प्यार का सौदा, कुछ ऐसी थी की बाजी हार गए हम, ओ सामी जुले ये चित चोर सी। कर न सके हम प्यार का सौदा, कुछ ऐसी थी की बाजी प्यार का सौदा। मुझे तुम याद आए तो बहुत याद आए, मुझे तुम याद मुझे तुम याद आए, बहुत याद आए। अंकित भाई रूबी जी आई है, रूबी
बता रोशनी जी, राधे 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 राधे। अच्छा अच्छा जी, बहुत बहुत स्वागत है। अच्छा, 2 चैनल है यहाँ, चलो बहुत अच्छी बात, राधे राधे। हमारे भी 2 चैनल हैं, 2 फ़ोन है, 2 चैनल है, लेकिन मेन चैनल हमारा ये है जो सब्सक्राइब मोनेटाइज है, चैनल हमारा ये। बाकी ये दूसरा चैनल है, दूसरा वाला इसमें सपोर्टिंग चैनल है। चलो इसको भी हम करे दे रहे हैं आपको, इस पर सपोर्ट करे दे रहे हैं। अच्छी बात है। अंकित, तुम्हारी बात समझे नहीं। आपका चैनल मोनेटाइज नहीं कोई है आपका? हाँ बोलो। हो जाएगा, आपका चैनल हो जाएगा, टाइम लगता है। हाँ, उसमें कभी कभी 15 दिन लग जाते हैं, कभी 8 दिन। हमारा खुद 10 बजे अप्लाई किया था हमने, 10 बजे सुबह। हाँ, और रात में 12 बजे आया था। हाँ, ईमेल चेक करते रहना आप बस। अंकित भैया बहुत अच्छे हैं। हाँ, अंकित भैया ने हमारी बहुत सपोर्ट की। हाँ, कुछ जानते नहीं थे चैनल बना, जिसे अंकित भैया वीडियो बनवाते थे, अपनी बाइक लेके हमारे यहाँ आते थे। हाँ, बड़ी हेल्प की अंकित भैया ने। बहुत अच्छे लोग, ऐसे लोग मिलना मुश्किल हो जाते हैं। फिर अंकित भैया हमारे यहाँ कानपुर आए हैं, हमारे घर पे। हाँ, हमारे गांव बुला लेते, फ़ोन करके तुरंत आते थे अंकित भैया वीडियो बनवाने के लिए। तो सारा दिन रहता था, हम लोग जंगल में वीडियो बनाते थे। हाँ, खाली कोल्ड ड्रिंक समोसा हो पाता था, बस खाना पीना नहीं मिल पाता था। हाँ, बहुत हेल्प करी अंकित भैया ने। हाँ, हेल्प करी और हेल्प करेंगे सबकी। हाँ, अभी तुरंत चले। तो अब कब केक कटेगा रोशनी जी, बताएं। हाँ, मोनेटाइज होना बहुत बड़ा काम होता है। एक स्टम्प मिल गया आपको। हाँ, आपके अंदर एक ऊर्जा आएगी। हाँ, कि हमने जो अब तक किया, हमारी मेहनत सफल हुई है। वो तो भाई सब माता पिता का आशीर्वाद है। रोशनी बहन, अगर आजकल किसी बुलाओ तो आदमी कहेगा पेट्रोल खर्चा तो टाइम नहीं है मेरे पास, लेकिन हमने जब फ़ोन किया अंकित भैया, तब हमारे घर आए हैं।
अपना पूरा पूरा टाइम देते थे हम, हमको ध्यान है सब। आप तो फ़ोन पर काम कर दिया, हमारे गांव आते थे, पूरा दिन रुकते थे, वीडियो शूट होता था, फिर चले जाते थे यहाँ। अब अंकित भाई की शादी में आना है आपको। हाँ, रोशनी बहन। हाँ, अंकित जी ने मेरा बहुत सपोर्ट किया है। लाइव कैसे आते सब कुछ अंकित ने सिखाया, हमको तो कुछ आता नहीं था इंग्लिश वगैरह। हाँ, कैसे ब्लू दिया था, कैसे लाइव किया था, सब अंकित ने सिखाया हमको। हाँ, बताएं रोशनी जी कब केक कटेगा? सही बात, सही बात। इनका कितना वॉच टाइम हो गया था, कितने सब्सक्राइब हो गए थे? अच्छा, बहुत अच्छी बात है। शॉर्ट में यही होता है, व्यूज बहुत आता है। हाँ, लॉन्ग में व्यूज नहीं आता है। लेकिन पैसा लॉन्ग वीडियो में ज़्यादा है। हाँ, है ना अंकित भाई, ये बात। हाँ, लॉन्ग में व्यूज ज़्यादा आता है लेकिन पैसा कम है। शॉर्ट में बहुत व्यूज आता है शॉर्ट में, लेकिन पैसा कम है। लॉन्ग में व्यूज कम आता है तो पैसा ज़्यादा है। कभी कभी कमेंट रुक जाते हैं यार अंकित। हाँ, हमारा वो आश्रम वाला वीडियो बढ़िया चल रहा है। 250-300 व्यूज आया उस पर, लॉन्ग वीडियो पर। है हमने स्टोरी बढ़िया लिखी थी वो। हाँ, बैनर बनवाया था, खर्चा भी किया था। हाँ, 250 रुपये का बैनर बनवाया था, 250 रुपये कोल्ड ड्रिंक सब लड़कों के लिए मंगवाई थी, समोसा वोसा मंगवा के, तब वीडियो शूट करें हमने। कहा 2 पैसे 500 रुपये लगा तो कभी कभी अंकित कमेंट रुक जाते, इसलिए लगता है कमेंट पढ़ नहीं रहे हैं। पढ़े जाओ, कमेंट शो नहीं करते। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी।
राम सिया राम सिया राम जय जय राम लखन कहा। नमस्कार। राम सिया राम जय जय राम लखन कहा सी हमरे जाना देव सब धनुष शमन किया राम हो राम। राम सिया राम लक्ष्मण राम भजो भजो सिया लक्ष्मण राम भजो भजो सिया राम भजो सिया राम सिया राम जय जय राम। राम सिया
राम सिया राम जय जय राम लखन काशी हमारे जाना देव सब धनुष समान सिया ओ रामा और दोस्ती है बहना तो भाई है प्यार राम सिया राम प्यार तुम्हें करते हैं इतना जितने सागर में मोती चूल्हे होठों से गल पास जो तुम मेरे होती प्रभु की कृपा भयम सब काजू
प्यार तुम्हें करते इतना जितने सागर में मोती। नमस्कार भाई, नमस्कार पांडे जी। और लखनऊ आ गए कि नहीं आए अभी? बताएं पांडे जी, कहाँ हो इस समय? आ गए लखनऊ गांव में भी? बोले पांडे जी, पूछ रहे हैं लखनऊ में गांव में हो भी? आ गए कि नहीं आए लखनऊ पांडे जी, बताएं। बड़ी इमोजी ने भेजा करो, छोटी इमोजी मत भेजा करो। जैसे बड़ी है ना वो वाली भेजा करो, ये बड़ी बड़ी वाली है। पांडे जी पूछ रहे गांव में कि लखनऊ आ गए हो? अच्छा, कब तक आओगे लखनऊ? और आप भी कोई शायरी वायरी सुनाए रे का भी? यहाँ का एक आधी कोई शायरी सुनाए आप। राधे राधे भैया। राधे राधे। खोल लाई। हाँ हाँ भैया। सुनाए पांडे जी कुछ यार? कर न सके हम
बहुत बहुत शुक्रिया आप। हाँ, हम कपड़े सिलते हैं, कहते हैं अगर मज़ा ना आए तो पैसे वापस, समझो। हाँ, काम हो और तुमको मज़ा आना चाहिए। हाँ, समझ रहे ना पांडे जी। हाँ, कोई काम करा तो उससे ये बात कह देते हैं, अगर काम में ना मजा तो बेकार थी, हमारा काम करने बेकार हुआ। काम हो, अच्छा लगे, पहनो, उसके बाद पैसे देना तो हमको। लेना जो तुम याद आए तो बहुत याद आए हैं। हाँ हाँ, बोलो। कहाँ रहते हो, कहाँ? हाँ, फोन उठा तो रहे, उसमें बेल नहीं बज रही ना। फोन उठाए नहीं तो ऐसे कैसे पता चला? हाँ, फोन इस पे कहाँ, तुमने फोन उस पे किया था? हाँ, उसमें। हाँ, वो नंबर कहाँ? डायरी नहीं मिले? डायरी मिलेगी तो। हाँ, वो डायरी थी कहीं, डायरी में लिखा था, वो डायरी मिले। हाँ, पहले और परेशान करो, कुछ मशीनें भी लाओगे। हाँ, ऑनलाइन देखो वाला कोई है? हाँ, सनातनी जी आए थे। हाँ, सुबह आए थे। हाँ, आए थे सनातनी जी। ये वाला निशान बंद कर दे, काजू वाला ना बंद हो जाइए भैया, बंद हो जाए तो कर दे। बंद का मालूम पड़ेगा। वही है, चलो रहिए, कम पुरानी है, कोई बात नहीं। आज मेरे यहाँ बिल्कुल बारिश नहीं हुई, कल हुई थी। यहाँ बहुत गर्मी है। आज मेरे यहाँ बहुत गर्मी है, बारिश नहीं हुआ।
लखनऊ कब आओगे आप? बताएं पांडे जी, लखनऊ कब आओगे? कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, की बाजी हार गए हम। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी, की बाजी गए कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कोई नहीं बेटे, वो होती है रोटी आगे लगा के देना, वो नहीं यार मास्टर, मतलब
अभी तुमको बुक नहीं करेंगे हम। तीसरी चीज हमका तो ये समझ लो कि तुम अभी हमारे सामने लौटे हो, जिनको जो तुम्हारे गुरु जी हैं वो भी लौटे हैं इस लाइन में। उम्र भले उनकी हमारी जैसी है, लेकिन क्षेत्र में लौटे हैं हमारे सामने। पहले कहते हैं, हमने कहा मैं 13 साल की उम्र से कलाकारी कर रहा हूँ, और मैंने कहा मैं कलाकार पैदा करना जानता हूँ। सही बात। और हमने कहा अभी हम देखो बुला लेंगे, हमारा काम नहीं खराब होगा। तो मेरे उन्होंने पार्टी फोन किया, काम कैसा हुआ? अरे कहना पिछले साल से आपके भी अच्छा पंडित जी ने किया। हमारे कहते आप जाओ तो एक बार नाम हो जाए। हम आपके साथ जाते आते पूर्वा मौलामा सब जाते आते रहते हैं। अब होने लगे ना बहुत जागरण पूरा आराम। पूर्वा मौलामा, बीघापुर, हाँ। सज्जनगंज, हाँ। और तुम्हारे लालपुर, भोजपुर। रास्ता वही जाने के, जब अचलगंज जाओ, अचलगंज से रेडपुर के लिए मुड़ा है, चाहे बीघापुर से पूर्वा आ जाओ, तब नौराम आ जाओ। अरे वो तो लोकेशन पूरा भेज देंगे, दारू लोकेशन भेज देंगे, उसी सारे लोग चले जाएंगे। अच्छा, वो लोग आ रहे हैं, 2-3 पार्टियों से बात चल रही उनकी, तो वो जा रहे हैं, उनको जानते होंगे वहाँ पर पार्टी है, नादान पार्टी करके। हाँ हाँ हाँ, नरेंद्र नादान की आकाश नादान। आकाश नादान। हाँ। तो मतलब वो लोग गाड़ी 4 पहिए गाड़ी से आए तो सब जगह देखेंगे, तो जो अच्छा बजट होगा, हाँ अच्छा काम होगा, उसको बुक होगा करना। तो हमने आपको लिए भी चांस दे रखा, हमने कहा नहीं, पहले सबसे पहले यहाँ हो आप हमारी दुकान पर। आ जाए तो हमें बुला लेना। उस कमेटी के सदस्य हैं हम लोग। हाँ। तो 11वां प्रोग्राम है। आ जाए तो हमें बुला लेना। हम उनकी बात सुन करके तभी तो बजट बनाएंगे, और आपके सामने बजट बना देंगे। एक बार नाम हो जाए, और इनको भी ले चलना है। हाँ, भैया को भी ले चलना है, भैया तो जाएंगे जाएंगे, किसी हिसाब से करना है। भैया ले जाएंगे जाएंगे। एक भतीजा है हमारे गांव का, वो प्रॉपर्टी काम करते लखनऊ में, वही सब कराते हैं, बाकी भी सहयोग गांव वाले कर देते, जिसको करना रहता है बाकी। बजट बता दें तो उनकी च्वाइस क्या है, और उनकी च्वाइस महंगी हो तो कैसे उतने में हो जाएगा। अच्छा, हमारा ये हिसाब है नहीं कि हम कहें हाँ हाँ लल्लू आएंगे, और तुमने लल्लू को देखा नहीं, और हम ले गए कल्लू को, बता रहे हैं कि लल्लू है। वो तो गलत काम ज्यादा नहीं चलता भाई। वहाँ 11वां प्रोग्राम है वही कर रहे हैं। ये देखो हमारे गाँव में होता है 51 प्रोग्राम हो गए। तो जो जो है हमारा काम बिल्कुल रियल है जो भी है, और हम वो कलाकार नहीं डालते जो कभी कभार निकले। हम कलाकार वो डालते हैं सीधे तरीके यूट्यूब सर्च करो। हाँ, यूट्यूब वाले कार्यक्रम चाहिए भाई, आओगे यहाँ, तभी हमने आज आपको बुलाया है कि कम से कम जान जाओगे। अरे जब वो आ करेंगे हमारे कलाकार, जब हमारे कलाकार आ करेंगे तभी समझ में आ जाता है कि हाँ ये सीखा सिखाया व्यक्ति है। ये नहीं कि आप कुछ दिन हमने बुलाया, उनको रिहर्सल कराया, तीसरे दिन काम नहीं लिया, वो बजा करके जैसे तैसे चले आए। एक सम्राट पार्टी है उन्नाव की, हाँ, वो कर रही थी 2 साल से। हाँ, लेकिन वो लोग क्या करते हैं कि वही कलाकार वही बार बार। अरे वहाँ तो यही है भैया, वो सब लोग यही है। वो केवल एक कलाकार नहीं जाते हैं, एक कलाकार ठीक ले जाएंगे, एक लेडीज ठीक ले जाएंगे, बाकी सब पैसे बाकी सब वैसा ही। और ये सब पूरी पार्टी का काम कानपुर में यही है, क्या समझे? फर्जी बैठे रहते हैं मंच में बस। हाँ हाँ, और हमारा वो काम नहीं है। तो कल सबसे पहले प्राथमिकता आपको दी जाएगी। हाँ, हाँ। अगर आपसे नहीं बात हुई, हम जिनके नाम बताएंगे वो उतने बजट में वो पूरे हाथ खड़े कर देंगे, भैया हम ये कलाकार नहीं दे सकते। हम जो हमारे साथ जो म्यूजिशियन जाते हैं, ये आकाश नारायण खड़ी है, उनको छू नहीं पाते हैं। ये मर गया बेचारा, ये तुम्हारे
अपने गुरु तरीके हमारा सम्मान करती हैं, बहुत चीजें हमारी बोलते हैं रुचि किंकर। रुचि किंकर बोले चलना, रुचि किंकर बहुत रुचि किंकर तो थोड़ी ले जा पाएंगे 50,000 15,000 लोकल में टाइम उठता है। नहीं, अब फिर रुचि किंकर ले गए सरदार। हाँ, हाँ। नमन सरदार ले गए तो रुचि किंकर को। हाँ, रुचि किंकर को नहीं ले गए होंगे, ले गए। नैना को ले गए होंगे यार। बस 11 साल तो प्रोग्राम, 11 साल प्रोग्राम रुचि किंकर गई है। वो वाला गाना गाया था कि पांचों मुट्ठी वाला गाना गाया था। तो मान गए हम लोग ये पंडित जी, हाँ तो गरीब आदमी, लेकिन से आप बात भी गाते नहीं बजाते हो वैसे हम लोग पूरे कानपुर का पता है हमको। हम वो कमेटी आ रही गाँव पिछले में साल ले गए थे, पिछले साल नहीं 4-5 साल हो गए। हाँ तब ले गए होंगे, तब उनका बजट कम था। तब कम तक रुचि कुंकर जा चुकी है। और ये 1200 में लेडीज लंबे चौड़े यूपी के अंदर लोकल में बजट उसका 15,000 रुपए है। और जहाँ ज्यादातर उसके बाहर काम हो रहे थे, जहाँपुर, बरेली, इलाहाबाद। हमारे यहाँ श्रोता है वो सब समझ जाते हैं। रुचि किंकर को यही गाना बता दिया हमने, ये गाना गाई थी यहाँ मुट्ठी वाला। उसी नमन सरदार गए थे इनके साथ, चंद्रा के साथ। ये गए, इन्होंने 2 साल गए लगातार, अपना खुद बुक कर लिया था वही प्रोग्राम। फिर ये ले गए थे 1200 ठेके के सामने लेडीज रहती लंबी चौड़ी गोरी गोरी घूमा, पति नहीं उनको लेके गए। फिर उत्तर रुचि कुंकर को लेके गए। एक इधर और रहता आवास विकास में लंबे लंबे बाल रहता, आशीष ऐसे कुछ करके वो भी जा चुका है। लगभग इस एरिया सब कलाकार। बबलू बेगाना, हाँ बबलू बेगाना है, वो भी जा चुका है वहाँ। भाई 10 साल प्रोग्राम है, 10 साल में कानपुर के ही कलाकार जाते हैं हर साल। पार्टी बदलती रहती है बस। कभी नमन सरदार ले गए, कभी संध्या ले गए। मतलब होता है वो डीजे जाती है। इनके गुप्ता, गजवा, जयसवाल और तुम्हारे जो है शालिनी थापा, ये सब सुपर स्टार सिंगर है रवि कानपुर के। और एक शुक्ला, विश्वास शुक्ला, विश्वास शुक्ला, अरे नशेबाज आदमी है। अच्छा वहाँ कहते पीने लगा वहाँ। राधे 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 राधे
और अनुराग कैसे हो? हर हर महादेव, हर हर महादेव। आराम है कर न सके हम प्यार बड़ स्वस्थ है, मस्त है।
सिया राम जय जय राम यही विधि होई नाथ हित मोरा करहि सुनिए तोरा सिमर राम तो फोटो वगैरह नहीं है आपके दरबार की? हाँ तो जब कल बुलाए दिलाए दिखा देना फोटो। राम राम पंडित जाओ नहीं कुछ तो दिखाना पड़ेगा कौन दरबार लगा कौन नहीं लगा पता लगे। हाँ हाँ ये बात है भाई होता का वो लोग 10 साल करा चुके ना भैया तो उनको भी अनुभव सब हो गया है। हमारे गांव 10 साल हो गए बाकी का बगल गांव 4-5 साल होता है। हाँ होता का जहाँ नए नए होते हैं वहाँ अब 15 हमारे पता कैसे फेल हो गए थे ना 15 कहने लगे 4 गाड़ियाँ हैं वहाँ गाड़ी गई 2 ही हैं। भाई वहाँ देख तक मेहमान कैसे हमारे दरवाजे पर आया है। अच्छा लक्ष्मण राम भजो भजो सिया लक्ष्मण राम भजो भजो
कहानी तो वही है जो रक्त लिया था उसी को। जो रक्त का रूप लिया रावण ने। और दूसरों ने कहा कि जब यहाँ डाला जाएगा वहाँ बाबा रखना हाथ पड़ेगा। साक्षात में हारा था तुरंत ही जब सवाल उसने वहीं उठला ने लड़वा दिया। कहा तो कहा जाता है तुम हमको भाई नहीं करते कि तुम हमको प्राकट के बाद पढ़ा नहीं है मुझे हमारी समझ में रखो वर्तमान है सबसे ज्यादा बदतमीज कोई आकार नहीं। दो संत वेश धारण करके एक संत का अपमान करें तो वह धातु जब तुमको ये नहीं मालूम है कि भक्त और पर्याप्त राम श्री राम पूजा उनके तो बने हुए हैं तो उनको उनको मनुष्य नहीं मानते। आज आपको कुछ नहीं उनको का अहंकार है भगवान का लिखा बाबू स्वयं शंकर सुमन के शंकर स्वयं आ गए हैं ना मंदिर बन के शंकर सुमन। अरे हम उससे उत्पन्न हुए संसार खत्म है तो भैरव रुपया है आपके भैरव वही है आपका दूसरा भाई है आपका दूसरा भाई है वही
अगर पाया है उसने तो बोला है दो दिया मगर संन्यास लेने के बाद संन्यास की भाषा का प्रयोग करना हमारा अंदाज नहीं हो ना नहीं कर रहा है भोग सबको भोगना पड़ता है मैं खूब संतोष हो गया अब वो जब तो ब्राह्मण है काम तो ब्राह्मण होने के बाद ब्राह्मण घर में जन्म लेने के बाद आप ब्राह्मण होंगे उनका तब दुकान कर लो तो जो काम करते ये बात बढ़िया कहा आपने। हाँ, अगर आगे हो जाए तो ब्राह्मण के दुकान करने तो आगे आए जब कर्म प्रधान विश्व लिखा है
दो जगह राधे घूम राधे गए। राधे राधे। आए 2 दिन घूम के। तुम्हारा हमारा लाइव चल रहा होगा। देखो फोटो यार, उसमें कमेंट करो एक आधा। बताया रेखा बहन, अब पैसा आने लगा मेरा यूट्यूब से, मोनेटाइज हो गया चैनल मेरा। हैं? चैनल मोनेटाइज हो गया मेरा। अच्छा हाँ, पैसा आने चलो लगा। बढ़िया।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आभार आपको। ठीक है। क्यों भाई तो मम्मी क्या बोल रही है ये बता।
कैसे हो संत कुमार? राम 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 राम। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण
सिया राम जय जय राम लखनका सिया रे सब धनुष सिया राम हो राम। मैंने तुझे चाहा तूने चाहा किसी और को करे मुझको चाहे मैं चाहूँ किसी और को चाह के
Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare Hare आएगा मजा बरसात का तेरा बांध के आऊंगा तेरा बांध के आऊंगा प्रभु की कृपा बयरु सबराजु जय मेरा मारी सुपल भवाजु सिमर राम भजो सिया राम सिया राम सिया राम हमरे जाना सुनह देव सब धनुष समना सिया राम हो रामा राम सिया राम जय जय राम राम सिया राम जय जय राम लखन कहाँ हमरे जाना देव सब धनुष समना सिया राम हो राम राम जय सरसिराखा तो करी कर की कर्म प्रधान ईश्वर सिराखा तो करी कर कर्म प्रधान सिराखा तो करी कर की कर्म प्रधान ईश्वर चिराखा करी प्रधान ईश्वर चिराखा करी प्रधान ईश्वर चिराखा करी
सिया राम सिया राम सिया राम सिया लक्ष्मण राम भज भज सिया लक्ष्मण राम भज भज राम सिया राम सिया राम सुख निकाल श्री हरे राम राम
जी लाइट चली गई यहाँ। और बढ़िया सालू जी सब। दीपक जी कैसे हैं? आज बहुत गर्मी, यहाँ बारिश हुआ नहीं इसीलिए यहाँ। बताएं सालू जी। लाइट नहीं थी तो बैठे थे, हमने कहा देखिए बोला। बताएं सालू जी, अब देखो। बताएं सालू जी। आप नहीं लाइव चालू कर रहे हैं सालू जी? राम सिया राम सिया राम, जय जय राम, लखन कहाँ से
हमरे जान सुनो बेवसा धनुष समान सिमर राम भज लाइटें चली गई थी यार। शायद तो अभी गई थी 5 मिनट हुए हो गया है एक बचा उस ठीक है वो तो बाहर में उधर भी लाइट गई थी नहीं गई थी गई है
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Bala, Hare Kana, Hare Hare. Ram Siya Ram, Siya Ram, Jai Ram, Bhajo Siya Ho. हर जही विधि हो ही नाथ हित मोरा। कर न सके हम प्यार का सौदा, कुछ ऐसी थी जीती बाजी हार गए हम। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही कुछ ऐसी थी। कर न सके हम प्यार का सौदा, कीमत ही ऐसी थी।
राम सिया राम जय जय राम लक्ष्मी का जय राम देव सजन सीता माना सिया राम हो राम लक्ष्मी कहा हंसी हमरे जाना कर न सके हम प्यार का सौदा कीमत ही कुछ ऐसी थी मन की बाजी हार गए ऐसा हंसी खुशी गम के होते हैं एक जैसे आंसू खुशी गम के होते हैं एक जैसे इन आंसुओं की कोई जान नहीं होती आंसू खुशी गम के होते हैं जैसे आंसू की कोई पहचान नहीं आंसू खुशी गम के लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो लक्ष्मण राम भजो भजो सिया हो प्रभु की कृपा भयम सब काजू जैन लक्ष्मण राम भजो सिया हो भजो सिया हो थी इम्तिहान लेती दोस्तों की जान लेती है जिंदगी इम्तिहान लेती आशिकों की जान लेती है
राधे राधे सुनीता बहन। आज सपना बहन की लाइव नहीं चल रहा क्या? गए थे लेकिन हमको लगता नहीं चल रही। आप नहीं गए सुनीता बहन? चल रहा है कि नहीं चल रहा सुनीता बहन सपना बहन का लाइव? पता है सुनीता बहन सपना बहन का लाइव चल रहा कि नहीं चल रहा? हमें तब चल नहीं रही सपना बहन की लाइव आज। सीताराम सीताराम। और उनको पहचानते हो ना अनुराग सुनीता देवी जी को? सोनम लाइव नहीं चल रहा क्या सपना बहन का? क्यों सोनम? बोलो सोनम लाइव नहीं चल रहा सपना बहन का? हम तो गए थे तो हमको नहीं नोटिफिकेशन आया। शायद चल नहीं रहा उनका लाइव। हाँ चल रहा हो तो 9 बजे चल जाता है। बताना देखकर। हाँ बोलो सुनीता बहन खाना हो गया? हाँ तो सुनीता जी को दूसरा नाम मिलने वाला था लेकिन हमें लगता है लाइव नहीं चलेगा सपना बहन का। नहीं आप सुनीता जी के 2 नाम हो जाते हैं। राधे 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 राधे। हाँ अब चलेगा भी नहीं चल रहा तो चल जाता अब तक। हो सकता है लेट हो जाए थोड़ा बहुत देर। सोनम तुम्हारा खाना पीना हो गया नहीं भी? बोलो सोनम तुम्हारा खाना पीना हो गया? क्यों सोनम आज एक नाम मिल रहा था सपना जी के 2 नाम उनके हो जाते सुनीता बहन के, लेकिन न जीतू भाई आए न सपना बहन आई, आज कोई आए नहीं। फूल सिंह है कि नहीं आए कि नहीं आए सोनम? नहीं किस्मत अच्छी है, सोच विचार को होगा। हाँ
राधे राधे मिठल भैया। सोनम देखो विठल जी आए हैं। नमस्कार नमस्कार। बढ़िया, अभी दुकान पर है, काम कर रहे हैं। हाँ? बाप भी से हैं? क्या है? मतलब हमसे का जो है मतलब बोलो अमित, कैसे हो? सोए नहीं अभी?
पे चलो, घर पे नहीं कोई नहीं। सोनम दीदी है देखो। आगे जाओ, बिल्डिंग वाली दुकान है आपकी काटा, बिल्डिंग वाली दुकान में जाओ आपकी काटा। हाँ मेरी दुकान में बैठो जा। हाँ बढ़िया है अमित, स्वस्थ है, मस्त है। सोनम ये अमित नहीं, ये गांव वाले अमित हैं, जयपाल चाचा के लड़के हैं। वो अमित नहीं है, ये बरवा वाले अमित हैं। बढ़िया है। और तुम कहाँ, घर पे हो मंदिर पे हो अमित? बढ़िया है। अमित भाई है, अमित, हाँ गांव के अमित। सोनम उनके जयपाल चाचा के लड़के हैं अमित, ये बरवा वाले अमित हैं अमित। और अमित बनाया नहीं चैनल तुमने अभी? देखो बुला रहे हैं इनको, अमित को। कब तक बनेगा चैनल तुम्हारा? व्हाट्सएप नंबर है मेरे पास उनका। बुला रहे हैं भैया। और अमित बताओ, गांव बारिश वारिश हो रही नहीं हो रही? तुम सोनम नहीं कर पाती लेर? कल यहाँ बहुत बारिश हुई थी यहाँ। ये सोनम दीदी, हम इनको सब्सक्राइब करना है। हाँ सभी लोग अब दूसरे ज्वाइन करे हैं। देखो भेज रहे हैं सुनीता बहन लिंक, उनको अमित भाई को बुला रहे हैं।
जाना मत सोनम, तुम भी सुनीता बहन, तुम्हें नहीं जाना है। बोलो सोनम। सुनीता बहन बहुत बढ़िया है वो सब लोग। हाँ, जानती है सोनम, ये भी शहर में रहती हैं। पानी टंकी टोटी सब फिट करना, लोगों को पानी पिलाते हैं। और अमित बताओ, कैसा है माहौल गाँव में, कैसे हो? जल्दी जल्दी कमेंट किया करो अमित, जल्दी बनाओ चैनल, फिर तुम्हारा चैनल आईडी पिंग कर दिया करेंगे। देखो अभी कर रहे हैं तुम्हारी आईडी पिंग। ये देखो तुम्हारी आईडी पिन हो गई अमित। अब कोई आया करे तो बोल दिया करें इनको सब्सक्राइब करो। हाँ, हमारा लाइव दिन भर चलता है, काम करते रहते, मोबाइल स्टैंड पे लगा देते हैं, हमको टाइम अलग से नहीं देना पड़ता है। जय हो जय हो। जय कन्हैया लाल की, हाथी घोड़ा पाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। और अमित मम्मी भी सो गई, नहीं सोई अभी? हर हर महादेव, हर हर महादेव गेविंग जी। हर हर महादेव, हर हर महादेव।
और बताओ अमित, मंदिर पे हो, घर पे हो? हरे राम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण। ये अमित गांव के हैं, सुनीता बहन हमारे गांव के हैं अमित भाई। हमारे भतीजे लगते, पड़ोसी हैं। हर हर महादेव, हर हर महादेव। ये सुनीता बहन वहाँ से, अमित है कानपुर शुक्लागंज से। अमित थोड़ा जल्दी जल्दी मैसेज किया करो। हाँ चाचा जल्दी व्हाट्सएप कंप्लीट कराओ सब लोग। हाँ राधे राधे ओम नमः शिवाय करके अमित जल्दी जल्दी मैसेज करो। हाँ बहुत सपोर्ट करती है अमित भाई, सुनीता बहन यहाँ। गेमिंग जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। ये देखो अमित तुमको भी जानने लगे सब लोग। हाँ सुनीता बहन ये भी भतीजे हैं हमारे अमित जी। यूपी 35 लगता है ना उन्नाव जिला। हाँ इसीलिए इन्होंने आईडी सोनम बना रखा, यूपी 35। अमित भाई हमारे गांव से, हमारे पड़ोसी हैं, भतीजे हैं हमारे सपना सुनीता बहन। हमारे पड़ोसी हैं, हमारे भतीजे हैं। सुनीता बहन अमित भाई ने लिखा ना आईडी में, अमित भाई यूपी 35 उन्नाव जिला। हाँ अमित भाई राधे राधे बोल रही आपको सुनीता बहन। राधे राधे जवाब दो भाई अमित। बोलो अमित। लाइव में आया करो, सब लोग जान जाएंगे अमित, फिर तुमको तुम्हारी भी लाइव में सब लोग आया करेंगे। सब दोस्त बन जाते हैं। सुनीता बहन ने अमित इतनी हमारी सपोर्ट करी कि हम कह नहीं सकते हैं। बहुत अच्छी बहन है, शुक्लागंज से है। चौकीदार जी राधे 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 राधे। कहाँ थे सर? आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं भी चौकीदार, तुम भी चौकीदार हो। अमित ये देखो सोनम, ये यूपी ग्रामीण पहरी चौकीदार है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। राधे राधे। बता चौकीदार साहब। चौकीदार सोनम, इनको चौकीदार जी को सब्सक्राइब कर लो। हाँ अमित तुम भी इनको कर लेना। हाँ ये अमित ऊपर चौकीदार जी हैं। हाँ ये भी दोस्त हैं, बड़ा सपोर्ट करते हैं हमारा।
राधे 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 सभी को। अब इसमें अमित खाली क्या होता है कि ये कोई जरूर अपने लोग सपोर्ट करें। देखो सब लोग कहाँ से हैं, चौकीदार जी बहुत दूर से हैं। अभी जो थोड़ी देर आए थे भैया वो महाराष्ट्र से थे। राधे 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 राधे। चौकीदार जी कहाँ गए, कमेंट करें आप। चौकीदार जी ये हमारे भतीजे हैं, अमित कुमार, अमित भाई यूपी 35 हैं। और ये हमारी भतीजी है सोनम कुशवाहा। सभी लोग एक दूसरे को ज्वाइन करें हैं। सुनीता बहन राधे राधे। यूपी प्रहरी चौकीदार जी हैं। बताएं सर कहाँ थे आज आप दिन में चौकीदार जी? बोलो भाई चौकीदार जी राधे राधे बोल रहे हैं सोनम जी आपको। बोलो चौकीदार जी। हाँ अमित कहाँ चले गए, कमेंट करो। आप भी चौकीदार जी लाइव चालू करें तो आपकी लाइव में हम लोग आया करेंगे। हाँ हाँ सोनम आएंगी, अमित आएंगे, सुनीता बहन आएंगी, सब लोग एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे। सोनम जाना तो ब्लू वापस करके जाना है। कमेंट के साथ सोनम किया करो, पता लगे कि उन्होंने किसने हमको सब्सक्राइब किया है। चौकीदार जी आपके एक सब्सक्राइब बढ़ चुके हैं।
जब कमेंट सब्सक्राइब किया करो तो कमेंट करके तब सब्सक्राइब किया करो। बताएं चौकीदार जी कब लाइव आओगे आप? सोनम जी का लाइव सुबह 11 बजे आता है। ठीक ठीक। बाय बाय। अमित जब टाइम मिला करे आया करो, ठीक है? जब जिसके टाइम पास समय हो तब आए सभी लोग। कब तक बनेगा अमित तुम्हारा चैनल? देर से आना जल्दी जाना, ऐसा ही ठीक नहीं। देर से आना जल्दी जाना, ये साहिब ये ठीक नहीं। रोज बनाना एक बहाना, चाहने वालों को पाना, ये साहिब ये ठीक नहीं। देर से आना जल्दी जाना, ये साहिब ये ठीक नहीं।
हर हर महादेव, हर हर महादेव। राधे राधे, राधे राधे। जाने वाले चलने वाले हैं अनुराग हम भी अब। जेपी भैया, बाय अनुराग। वो जेपी भैया, राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।